theme for narcissists is I'm superior to you, and that makes their relationships difficult. Anti-social personalities. یہ افراد قوانین اور سماجی اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے. The third is not focusing on emotions, instead focusing on thinking and doing. تو وہ اپنے غصے کو سمجھ کر گہری سانس لے سکتا ہے اور پھر شانت ہو کر اپنے دوست سے بات کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچے مشکل سچویشنز کا سامنا کرنے کے لیے کریٹو طریقوں سے سوچنے اور سولوشنز ڈھونڈنے کی چھمتا رکھیں. And so what a lot of people do, they start seeing a conversation getting really negative and high conflict, blaming, all or nothing. ہیلو اور السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عامر خان ہے اور میں آپ کی خدمت میں رانی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رانی جی. السلام علیکم، میں رانی چیٹ جی پی ٹی اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صحت کا دھماکہ ود رانی چیٹ جی پی ٹی اور ڈاکٹر خان کے ساتھ. ہم آپ کو دنیا بھر کی اپڈیٹڈ ریسرچ، یونیورسٹی پیپرز اور لیٹسٹ گوگل انفارمیشن فراہم کریں گے. ڈاکٹر خان سوال جواب کریں گے اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے ایم ایس سی آرتھوپیڈکس یونیورسٹی کالج لندن سے، ایف آر سی ایس آئرلینڈ سے، اور وہ بورڈ سرٹیفائڈ ہے انٹرنل میڈیسن، کریٹیکل کیئر میڈیسن، پلمنری میڈیسن اور سلیپ میڈیسن میں. ہر تنازع برا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیں سکھاتا ہے، ہماری حدود طے کرتا ہے اور ہمیں مضبوط بناتا ہے. لیکن جب تنازع ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک مستقل عادت بن جائے، کچھ لوگ مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے، الزام تراشی کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ دفاتر، رشتوں، دوستوں، حتیٰ کہ خاندانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو دوسروں کو تکا دیتے ہیں اور بے بس کر دیتے ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آج آپ کے لیے، آپ کی حاضر خدمت میں ہمارے مہمان اس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہم ان لوگوں کی نفسیات اور ان حربوں اور ان سے نبڑنے کے لیے بہترین طریقے سیکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ کبھی کسی زہریلے رویے میں پھنسے ہیں یا کسی مشکل شخصیت کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل محسوس کرتے ہیں تو یہ گفتگو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عامر خان اور خان کلینکس کا ایک اور شاندار ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا ٹاپک تنازعات کے معاملے میں عالمی شہرت یافتہ ماہر بل ایڈی سے ہے. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کا تعارف کرواتے ہیں. is Bill Eddy. Bill is the co-founder and chief innovation officer of the High Conflict Institute. He pioneered the high conflict personality theory to explain and manage relationships with highly difficult people and personalities. He's also the co-host of the popular podcast It's All Your Fault, with over 12 years as a licensed clinical social worker, 15 years as a certified family law specialist, and 15 years as a senior family mediator. He brings a lot of experience, a wealth of knowledge, and specializes in conflict resolution. He's also the developer of the new ways for family skills, training methods for high conflict divorce, and new ways for mediation methods for high conflict cases. Bill authors over 20 books on managing high conflict personalities, including 5 types of people who can ruin your life, and splitting, protecting yourself while divorcing someone with borderline or narcissist personality disorder. Other notable works include BIFF, It's All Your Fault,
and our new world of adult bullies. His expertise has made him a leading voice in conflict resolution, offering strategies to handle toxic interactions. Bill Eddy. तो आइए हम पहले डॉक्टर एडी से पहले सवाल का जवाब सुनते हैं जिसमें उन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताया है। ट्रेट्स का मतलब ये है कि वो पर्सनालिटीज जो बार बार एक काम करती हैं। तो आइए उनकी बात सुनते हैं कि उनमें कौन से 4 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल डॉक्टर खान, ये बहुत अहम मौजू है। मैं इंतज़ार में हूँ कि आप मुझे जवाब देने के लिए बुलाएं। Bill, let's start to explain our audience first about different type of personalities. Tell us what are the personalities that they can categorize and should look for during their routine life, whether it's at home or at work. Well, think in terms of the idea of high conflict personalities, because that's where the difficulties come in. And actually, people don't need to look for these, they'll show up. There's four characteristics that we think of. First is that the person is preoccupied with blaming others. It's all your fault. It's everybody else's fault, not my responsibility at all. I'm 0% responsible in this conflict. And this could be a marriage, a workplace, community, all kinds of settings. Second characteristic is a lot of all or nothing thinking. Is it's my way or the highway, no flexibility, no consideration of different options. Third is often unmanaged emotions, that the emotions drive the person's thinking instead of clear thinking. And so their emotions may be rage, may be helplessness, burst into tears, or start yelling, and not really trying to solve problems. And the fourth is extreme behaviors. They may spread knowingly false rumors on the internet, or they may be violent in a marriage, or they may, in the workplace, hide things or steal things because they're angry at a coworker. So this pattern of high conflict, and as you said early on, it increases conflict instead of trying to resolve it. So people don't actually have to look for this. This will just show up and be in their face in many ways. It catches people by surprise. But what's helpful is to go, oh, okay, this may be a repeated pattern. So this is a high conflict person, and there's four things I shouldn't do, which I'll get to in अच्छा, तो हमने सुना डॉक्टर एडी ने क्या कहा है पर्सनालिटी ट्रेट्स। रानी, उसका 4 ट्रेट्स का फिर से एक दफा खुलासा हमें बता दो। जी डॉक्टर खान, पहला पहलू, ये अफराद बार बार इल्ज़ाम तराशी करते हैं, यानी वो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते और दूसरों को मूरेदे इल्ज़ाम ठहराते हैं। दूसरा पहलू, इनका रवैया जज्बाती और अक्सर गुस्से से भरपूर होता है, जिसकी वजह से छोटी बातें भी बड़े तनाज़ात में बदल जाती हैं। तीसरा पहलू, इनका रवैया कंट्रोल करने वाला होता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो। चौथा पहलू, वो अपने मसाइल दूसरों पर डाल देते हैं, यानी वो अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। ये चारों पहलू इनकी शख्सियत की बेहतर समझ-बूझ के लिए अहम हैं। चले आए हम अब बिल एडी का अगले सवाल का जवाब सुनते हैं जिसमें उन्होंने 5 पर्सनालिटीज के बारे में बताया है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्सनालिटीज ट्रेट है, ये अपनी बार बार यानी रिपीट ये करेंगे और हमें आइडेंटिफाई करने से हमें सहूलत मिलती है कि हम इस पर्सनालिटी को किस कैटेगरी में रखें। तो चलाएं पहले सुनते हैं फिर हम बात करते हैं। But first, I want to talk about the five personalities types that show up within high conflict personalities. And these have to do with personality disorders, but not everyone with a personality disorder is a high conflict person. They may not blame other people, they're just stuck in their life. So, personality disorders mean they have an enduring pattern of behavior that doesn't change or rarely changes. So, one of the types is narcissistic personality.
And so when you have someone with a narcissistic personality, very self-centered, wants to look superior, puts other people down to put themselves up, and can be very uncomfortable, like in a marriage or in the workplace. Some supervisors have this personality and they pick on their employees, and their employees constantly feel put down, criticized, because the person's trying to look superior to them. So the theme for narcissists is I'm superior to you, and that makes their relationships difficult. But not all of them are high conflict. Some of them are just self-centered and not blaming. Secondly, borderline personality. And this is a wide mood swing, maybe sudden intense anger, and then loving and friendly and wonderful. So it's kind of a bit of a roller coaster, but it catches people by surprise because they think when everything's good, suddenly the person's outraged. Then they think things are terrible, and suddenly the person is friendly and loving and caring. So that's borderline. Not all of them are high conflict people. Some just make life hard on themselves. Third would be histrionic personalities, very dramatic, emotional. And again, some of them are blaming and some of them aren't, but they're very dramatic and emotional and it kind of undermine a lot of their own life. One thing, as I work with families, is often their kids are making adult decisions because they're acting in many ways like kids. They're so overwhelmed with their emotions and feeling like they can't handle life. Fourth would be antisocial personality, which in many ways is the criminal population, but also people that aren't in trouble with the law, but are comfortable lying, comfortable breaking the rules. Um, just the thing that really stands out is the substantial lying, willing to hurt people to get what they want, stealing, etc. It's like a lack of empathy, a lack of remorse. Fifth type would be the paranoid type, who just fear that people are out to get them, so they try to get people first. They may be um, think there's conspiracies against them, like in the workplace. They think everybody's trying to prevent them from getting ahead, when in fact it's their own behavior that's preventing them from getting ahead. And so they may carry grudges. They may just be suspicious of everybody, including spouses, coworkers, friends. Um, and some of them are high conflict and blaming, and some of them aren't. So these are the five kind of under the umbrella of high conflict. And people may notice these five patterns. It's kind of surprising how once you know a few things, you can predict several other things because of these being patterns, as you said. अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि बिल एडी ने हमें बताया नार्सिसिस्ट, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक, एंटी सोशल और पैरानॉइड पर्सनालिटीज, ये पर्सनालिटीज हैं. रानी, हमें इन पर्सनालिटीज के बारे में जरा बताइए और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज. ये अफराद खुद को बहुत अहम समझते हैं, दूसरों से तारीफी रवैये की तवक्को रखते हैं और अपने मफादात को अव्वलीन तरजीह देते हैं. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज. ये अफराद जज्बाती उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं. इनके ताल्लुकात गैर मुस्तहकम होते हैं और वो अक्सर खौफजदा या तर्क किए जाने का एहसास रखते हैं. हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटीज. ये लोग तवज्जो के तलबगार होते हैं, बहुत ड्रामाई होते हैं और अक्सर जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम होते हैं. इस तरह आप इन शख्सियात को पहचान सकते हैं. रानी, दो और पर्सनालिटीज है, एक है एंटी सोशल पर्सनालिटी, इसके बारे में हमें बताएं. जी डॉक्टर खान. एंटी सोशल पर्सनालिटीज. ये अफराद कवानीन और समाजी उसूलों की परवाह नहीं करते. इनमें झूठ बोलने, धोखा देने और जारहाना रवैया अपनाने का रुझान होता है. वो अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं. और पैरानॉइड पर्सनालिटी. पैरानॉइड पर्सनालिटीज. ये अफराद दूसरों पर बेवजह शक करते हैं और उनकी नीयतों पर भरोसा नहीं करते.
उनका रवैया मोहतात और शक पर मबनी होता है, जिसकी वजह से वो दूसरों से दूर रहते हैं। चले आए फिर हम बिल एडी के अगले सवाल का जवाब सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो कौन सी 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं इन लोगों से डील करते वक्त। तो आइए हम सुनते हैं, फिर रानी के बाद सुनते हैं। On to the next bit of how what are the biggest mistakes sometimes people make when we are dealing with a different type of personalities, but also these are high conflict individuals. So we're going to stick into go into that topic. Yeah. So So, four mistakes that people tend to make. And I'll talk mostly high conflict personalities because each of the subgroups also has the high conflict pattern. Or if you see the high conflict pattern, you don't have to figure out the subgroups. You can just know these four things to avoid. The first is trying to give the person feedback and insight into their own behavior. So if you start thinking, how can I make him see that he's the big part in the problem? Or how can I make her understand that she's sabotaging herself? Well, that's one to avoid because they don't take feedback and it makes the relationship harder with them. So excellent. that's the first thing is forget Don't try about to settle or avert, or just don't try to do that. Is there just any don't way of try to giving them do that. feedback? Yeah. So don't try to give them feedback about their own behavior to them because they'll just become more defensive and they won't like you. So instead, what you want to do is talk about, let's look at your choices now. So, like if you're in a couple relationship and they're saying, you did something yesterday and it's all your fault, and you want to say, well, look, you're the cause of the problem. Don't say that. You'll just get a new argument. Instead, say, you know what, let's talk about what we should do now. And so maybe it's planning an event or something like that. Let's just talk about what the next steps are. So keep the focus on what to do now and what your choices are rather than giving them feedback about themselves. Second is don't focus on the past. Focus on the future because people can argue endlessly about the past with high conflict people and you won't resolve anything because they're stuck in the past. So you want to say, you know what? Let's talk about what we can do now. I'm not going to argue about the past. We'll just have to agree to disagree or something like that. The third is not focusing on emotions. Instead, focusing on thinking and doing. And the mistake people make is they try to talk people out of their emotions. And high conflict people show more emotions than the average person. And they, in many ways, do sabotage themselves because their emotions take over and they don't think clearly. But by focusing on their emotions, saying, well, how do you feel about that? Or you shouldn't feel that way. When they focus on their emotions, they feel worse. When they focus on thinking and doing, they feel better. And the reason for this is very interesting. And I think, medical people certainly can relate to this, but the average person can as well. And that's the grieving process. When we go through the grieving and healing process, basically 5 stages: denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance. High conflict people don't go through this. They get stuck at anger. And so they don't resolve and heal and move forward from their emotions. And they're constantly talking about the past, I think, because they're trying to grieve and heal, but they don't have that psychological mechanism. And someday I hope people figure out the brain aspects of this to help people go through the grieving and healing process. So instead, what happens is they blame, they're stuck in the past, but they don't resolve the emotions. So if you're in an argument and they say, well, you're making me feel angry,
you want to say, let's not focus on our feelings. Let's focus on what to do now. Let's focus on what our choices are now. So you want to stay away from trying to give them insight, stay away from focusing on the past, stay away from focusing on emotions, and don't ask them how they feel in the middle of an argument because they're going to feel terrible and they'll feel worse if they focus on how they feel. So you want to focus on thinking and doing. What do you think about that? What can we do now instead? And the fourth thing that people make a mistake is they say, you're a high conflict person, or you have a personality disorder, or you're an abuser, or you're an alienator, or whatever labels. And nobody likes labels. It doesn't help, it makes it worse. And with high conflict people, if you say you have a personality disorder to them, they will never forgive you, even if they do. So don't say that. You can think that, but don't say it. चले रानी, आप भी हमने सुना है उनकी बिल एडी को, आप जरा उसका खुलासा हमें बता दें। 4 मिस्टेक्स जो हम बार बार करते हैं हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटीज को डील करते वक्त। जी डॉक्टर खान, 4 आम गलतियां जो हम हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटीज को डील करते वक्त करते हैं। पहली गलती, हम उनके जज्बाती रद्द-ए-अमल में खो जाते हैं, जिससे हम खुद भी जज्बाती हो जाते हैं। दूसरी गलती, हम उनके साथ बहस में पड़ जाते हैं, जो कि अमूमन बेफायदा होती है। तीसरी गलती, हम उन्हें ज़ाती तौर पर लेते हैं और उनके अल्फाज को दिल पर ले लेते हैं। चौथी गलती, हम उनकी बातों को जल्दी से कबूल कर लेते हैं, बगैर तस्दीक किए। ये 4 बहुत अहम नुकात हैं, जो हमें याद रखने चाहिए। डॉक्टर बिल एडी ने कहा कि इन लोगों को कभी फीडबैक ना दें, इसकी बजाय आपको उनके साथ मुख्तसर, गैर जज्बाती और हकीकत पर मबनी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। आपको उन्हें पुरस्कून और मुख्तसर जवाब देना चाहिए, ताकि तनाज़े मज़ीद ना बढ़े। और उन्होंने कहा कि उन्होंने आप जो है ना अपनी गुफ्तगू इस तरफ लेके जाया करें कि फ्यूचर की तरफ, उनको कहें कि बस मसलन आइए देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, आइए देखिए कि हमारी चॉइसेस क्या है, या इस तरफ कहें कि उनको लेके आए कि उनको बताएं कि ये कभी भी ना उनके ऊपर जाहिर करें कि आपको आपका रवैया ऐसा है और आपने ऐसे किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये बताया कि आप कभी पास्ट के बारे में ना उनको याद करवाया करें, बल्कि उनका ज़हन और फोकस फ्यूचर के बारे में करें। रानी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। जी डॉक्टर खान, डॉक्टर बिल एडी ने कहा कि हमेशा गुफ्तगू को मुस्तकबिल की तरफ मरकूज रखें। उनसे पूछें कि आइए देखते हैं कि हमारे अगले इक़दामात क्या हैं या हमारे इख्तियारात क्या हैं। कभी भी उनके माजी के रवैये पर तवज्जो ना दें, बल्कि उनका जहन और फोकस मुस्तकबिल पर रखें। इससे तनाज़े में कमी आती है और बातचीत तामीरी रहती है। बिल एडी ने फिर बताया कि इमोशंस जो है ना उनसे निकलना चाहिए फौरन, और ये तो गुफ्तगू को इस तरफ लेके जाना चाहिए कि हमें क्या काम इकदामात करने चाहिए, अपनी सोचें दोनों इमोशन से हटा के, फ्रस्ट्रेशन से हटा के, लड़ाई झगड़े से हटा के, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि जो 5 स्टेजेस ग्रीफ की हैं, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटीज इनमें नहीं गुजरते, और जब भी ये ग्रीफ होता है, इनके कोई गम या गुस्सा, गम या अफसोस की हालत में होते हैं, तो वो इन फेजेस से नहीं जाते। और आखिरी चीज जो बिल एडी ने बताया वो ये था कि इनको लेबल मत कीजिएगा। इन पर्सनालिटीज को कभी नहीं ये कहना चाहिए कि आप ये पर्सनालिटी हो और आप वो पर्सनालिटी हो। तो ये आपने उन्होंने मुख्तसर खुलासा सुना उनकी गुफ्तगू का। चलाएं, हम सोचते हैं कि बिल एडी ने वो कौन सी 4 चीजें बताई हैं जो हमें करनी चाहिए। आपने अभी पिछली गुफ्तगू में सुना कि जो 4 चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब 4 चीजें कौन सी नहीं करनी चाहिए? फीडबैक नहीं देना चाहिए, पास्ट नहीं डिस्कस करना चाहिए, इमोशंस नहीं करनी चाहिए, ये हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आगे उन्होंने ये बताया है कि 4 चीजें जिनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं उनके सवाल का जवाब। Would you say avoidance is the key, and just moving on, looking at the future, and trying to come up with steps that could help a relationship is the way to go? I think that's the major way to go. I can give you 4 things to do. Mm-hmm. Please. um, but it's basically those are the most important is avoiding those pitfalls.
But 4 things you can do. Right. First is something we call an EAR statement, EAR, statement that shows empathy, attention, or respect. So when someone's blaming you and says, yesterday you didn't plan the party right, you did everything wrong, Right. you can say, wow, well, sounds like you're having a hard time today. Or I can understand that would be frustrating for you. Or Sure. I respect your knowledge on this subject. Let's talk about what we can do now. So it's a brief statement that acknowledges them with some empathy, attention, or respect. And attention might be, hey, I see you're upset. Tell me more. I want to understand what's troubling you. So you're not fighting with them, you're working with them. Second thing is looking at options, proposals, choices, etc., analyzing options. And I should tell you, I call this the CARS method. C for connect with them with an ear statement. A for analyzing options, get them thinking so they're not stuck in all or nothing thinking. Third is respond to misinformation. And that's where our BIFF method comes in, which I'll talk about in a couple minutes. And then C is think about consequences. S is think about setting limits, because high conflict people often don't stop themselves. So you may need to say, hey, you can't talk to me that way. If you keep talking that way, I'm going to end this conversation. And so setting limits and imposing consequences. So those 4 to-dos: connect with ear statements, analyze options, respond to misinformation by being brief, informative, friendly, and firm, and set limits. Because they need that. They don't stop themselves. And actually, I'm working on a book on that right now. So by the Really. end of the year, we should have setting limits and imposing consequences. Slick solutions, SLIC. अच्छा, तो आपने सुना उन्होंने बताया कि हमें कार्स एक्शन CARS एक्शंस लेने के लिए कहा कि हमारी जो फोकस है तवज्जो है उस तरफ रखना चाहिए। रानी हमें बताएं कि ये कार्स CARS क्या किस चीज का मुहाफ़िफ है? जी डॉक्टर खान, CARS का मतलब है C connect with empathy, हमदर्दी के साथ जुड़ें। A analyze options, इख्तियारात का तज्जिया करें। R respond to misinformation, गलत मालूमात का जवाब दें। S set limits, हुदूद मुकर्रर करें। ये 4 इक़दामात हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी से निपटने में मदद देते हैं। सेट लिमिट्स का क्या मतलब है रानी? सेट लिमिट्स का मतलब है वाज़े हुदूद कायम करना, ताकि इनका मजाक और बहस बढ़ता ना जाए। ये आपके साथ जिस रद्द अमल करना चाहते हैं उनसे पहले ही आपकी हुदूद मुकर्रर करें। सेट लिमिट्स का मतलब है कि उनका मजाक और बहस कम न जाए। पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं कि तनाज़े को लेकर बातचीत खत्म कर दीजिएगा। सी का क्या मतलब है? सी के बारे में हमें दोबारा से समझाएं। सी कनेक्ट विद एम्पैथी, हमदर्दी के साथ जुड़ें। एम्पैथेटिक रिलेशनशिप्स, इंसानों से कनेक्शन। सी से मुराद है कनेक्ट विद एम्पैथी, यानी हमदर्दी के साथ जुड़े। इसका मतलब है कि आप उनके जज्बात को समझें और उनकी बात को एहतराम से सुने। हमें इसकी एग्जांपल दो रानी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स गुस्से में है तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपको ये मुश्किल लग रहा है। आइए मिलकर देखते हैं कि हम इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। एक और मिसाल, अगर कोई मायूस है तो आप कह सकते हैं, मुझे एहसास है कि आपके लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम मिलकर इसका हल तलाश करेंगे। बिल एडी ने 4 स्किल्स के बारे में बात किया है कि जो चिल्ड्रन में होना लाजमी है, खास तौर पे जब बच्चे कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी से डील कर रहे थे या उनके एक पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी वाले हैं। Eddie, I want to go on to the next topic a little bit and discuss children. And, you know, they become, unfortunately, um, a third party when there is a conflict. And adults, a lot of time, drag them in sometimes, and at other times, they're silent victims. And
They're observing everything. Give us some tips, first of all, to tell to our audience, what should we do about the kids? First of all, what are the techniques we should use not to involve children? What should we tell them? And then the second situation would be they're silently observing, and how do you reinforce them to think still in a positive way? Obviously, a lot of times after the conflict is resolved. Yeah, so this is hard, this is tricky, but this is so important. So one of the first things is helping children know about managing emotions. That parents, they may make a mistake, they may yell at the other parent and then say, I need to manage my emotions. I need to be responsible. And we talk about what we call the 4 big skills for life. Teach the children these 4 big skills by demonstrating them. One of them is managed emotions. And what research finds is probably the second most important parenting skill is to manage your own stress. And so if you manage your stress, you'll be emotionally available for your child, and your child will see that you can manage stress and learn how to do that themselves. Second skill is teach flexible thinking. Tell the child, there's usually more than one answer to most problems, and let's be open-minded to look at this. And we call these the 4 big skills for life, because this will help children as they grow up to use flexible thinking, not to get stuck in all or nothing thinking. The third is to use moderate behavior. And so in families, in the workplace, in the community, is moderate behavior works in relationships. Extreme behavior doesn't work. And if you want to have friends, you want to get jobs, you want to be respected in your community, keep moderate behavior. And the fourth thing is check yourself from time to time. Am I being flexible in my thinking, managing my emotions using moderate behavior? So you check yourself rather than blaming others. So these 4 big skills help them not absorb the negative behavior of high conflict. And that's the thing we want to do. We want to help them see what's a healthy way to grow up. And if their parents are fighting and one of them's a high conflict person, but the other isn't, the child can learn from the one who isn't how to manage themselves. And I deal with a lot of divorce situations where there's a high conflict parent and a reasonable parent. And so we help the parents teach the child, but we get court orders sometimes for both parents to learn these skills. And we call this the New Ways for Families method. So people are interested in these skills, helping their children. And we're also launching a program for intact families with this as well, learning these 4 big skills and teaching them to your children. Flexible thinking, managed. उन्होंने कहा है कि आप अपने मैनेज इमोशंस सबसे पहला स्किल है। रानी हमें बताओ कि मैनेज इमोशंस क्या है? मैनेज इमोशंस का मतलब है अपने जज्बात को समझना और उन्हें ठीक तरह से संभालना। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये स्किल बच्चों को मदद करती है ताकि वो अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सके, खासकर जब वो किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। हमें एग्जांपल दें इसकी 2-3। बिल्कुल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर एक बच्चा गुस्सा हो जाता है जब उसका दोस्त उसका खिलाफ खेलता है, तो वो अपने गुस्से को समझकर गहरी सांस ले सकता है और फिर शांत होकर अपने दोस्त से बात कर सकता है। 2. जब एक बच्चा स्कूल में किसी प्रॉब्लम का सामना करता है, तो वो अपने इमोशंस को समझकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति जैसे टीचर या माँ बाप से बात कर सकता है। 3. अगर एक बच्चा किसी कंपटीशन में हार जाता है, तो वो अपने इमोशंस को समझकर सीख सकता है कि कैसे अगले बार बेहतर करना है बिना अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिए। ये स्किल्स बच्चों को अपने इमोशंस को बेहतर समझने और संभालने में मदद करते हैं। क्या
अगला उसका पॉइंट था फ्लेक्सिबल थिंकिंग। रानी, हमें इसके बारे में बताएं कि डॉक्टर बिल एडी के मुताबिक फ्लेक्सिबल थिंकिंग क्यों बच्चों में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल थिंकिंग यानी लचकदार सोच बच्चों में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये उन्हें मुश्किल सिचुएशंस में अडाप्ट करने में मदद करती है। जब बच्चे फ्लेक्सिबल सोच रखते हैं तो वो नए तरीकों से सोच सकते हैं और प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए अलग अलग अप्रोचेस अपना सकते हैं। ये स्किल उन्हें जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने में और दूसरे लोगों के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाने में भी मदद करती है। तीसरा उन्होंने ट्रेड बताया था कि बच्चों में मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए। रानी, इसके बारे में हमें बताओ कि इसका क्या मतलब है। मॉडरेट बिहेवियर का मतलब है कि बच्चे अपने जज्बात को ठीक से व्यक्त करना सीखें, ना ज्यादा तेज और ना ही बहुत धीरे। इसका मतलब है कि वो अपने जज्बात को समझकर उन्हें ठीक तरीके से व्यक्त करें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये स्किल उन्हें सोशल सिचुएशंस में मदद करती है और उनके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाती है। अच्छा, बिल के मुताबिक उस बच्चों में कौन सा चौथा ट्रेड होना चाहिए। बिल के मुताबिक चौथा ट्रेट जो बच्चों में होना चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मतलब है कि बच्चे मुश्किल सिचुएशंस का सामना करने के लिए क्रिएटिव तरीकों से सोचने और सॉल्यूशंस ढूंढने की क्षमता रखें। ये स्किल उन्हें चैलेंजेस का सामना करने में और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। आइए हम नेक्स्ट सवाल का आखिरी सवाल का जवाब सुनते हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया से डील करने और टेक्स्ट और ईमेल्स के बारे में बताया है। Recognize that high conflict personalities and situations generally arise in close relationships. So that's why we see more of this in families, but we also see this in workplaces where people have to work close together, like healthcare, like higher education. That the tension and closeness, you can see more of this behavior. Also, that high conflict people, because they blame a lot, they blame people close to them, but they also blame people in positions of authority. And so they like to attack and criticize the police, government officials, government agencies. So people in the professions of like law enforcement, rules, enforcing the law, get attacked more, mostly verbally, every once in a while, violently. But people dealing with families a lot, um, so therapists, doctors, lawyers, um, the clergy, etc., dealing with families is more likely to see all of this and to be able to recognize it isn't a high conflict family, that the family may have a high conflict individual. And that's the thing that, there may be one person needs some more attention to calm them down, learn some skills, but also teach skills to everybody in the family, the kind of skills that I just talked about. Now, some people say, are certain professions more vulnerable to having high conflict people? And the reality is, if people have a lot of power over somebody else, that attracts high conflict people. So we often see them in management positions, like in business. We see a percent, say, in police force. We see a percent among lawyers who are high conflict people because there's a lot of tolerance um, for conflict in the legal field. But we also see in healthcare, higher education, that there's a lot of tolerance for high conflict behavior. And sometimes that reinforces people with these personalities. So mostly they could show up anywhere in the world, every occupation, every culture, every economic level, etc. And the thing is, think about the personality rather than the position. If you see a person with this personality, use the kind of skills that I talked about. Excellent. Thank you for responding to that. And let's go to one area that is very prevalent right now, and that is social media. Mm. Give our audiences, please, some tips. What tips would you give for those
who need not to respond to angry messages, texts, emails, for example, and especially when they see social media stuff online. Yeah. So let me mention our BIFF method, say a little more about that now. It's designed for emails, texts, social media posts. And the B stands for brief. Keep it brief. Don't go on and on and on, especially about other people. Second is be informative, just straight information, something that somebody needs to know. The party is at 5 o'clock tomorrow at such and such house. Rather than saying, you idiot, you never remember anything. Why should I have to tell you again when the party is? Just skip all of that and say, for your information, the party's at 5 tomorrow at such and such address. Then F for friendly. In other words, say, thanks for telling me your concerns. Here's some information you may not have. And the last is firm. End the high conflict conversation. Don't put hooks out there like, what do you think of that, buddy? And, you're the idiot. Things like that. So you want to just keep it small, keep it contained. Now, with social media, it's interesting that it feels like there's more high conflict on social media, but some studies show that not everybody's becoming high conflict on social media. It's people who tend to already be high conflict in person, and on social media, they can multiply their negativity. And so, what a lot of people do, they start seeing a conversation getting really negative and high conflict, blaming, all or nothing, is to just withdraw from that conversation. Don't get stuck there, because you can't argue with high conflict people and convince them to become reasonable. So that's what the research shows, is it's that percentage. Now, in terms of percentage, I often talk about 5 to 10% of people are high conflict people. And we don't have research to confirm that, but we do have research that says about 10% of people have a personality disorder, and that seems to be relatively true worldwide. So I think about 10% of people are high conflict, some with personality disorders, some not. So if you think about that, and maybe increasing, we're going to need to really learn how to set limits more and how to manage ourselves so that we don't get hooked into high conflict with high conflict people, and encourage them to get help, but don't expect it. बिल्कुल। सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेजेस से डील करना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि बच्चे ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टूल्स का ठीक से इस्तेमाल करना सीखें, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स। उन्हें यह समझना चाहिए कि कैसे अपने जज्बात और सोच को ऑनलाइन ठीक से व्यक्त करना है, ताकि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके। ये स्किल उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के मामले में भी मदद करती है। अच्छा, हमें BIFF के बारे में बताएं कि इसका क्या मतलब है, किस चीज की एब्रिविएशन है ये? BIFF का मतलब है ब्रीफ, इंफॉर्मेटिव, फ्रेंडली, फर्म। ये एक एक्रोनिम है जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यूज होता है, खासकर जब आप किसी को ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। इसका पर्पस है कि आप अपने मैसेजेस को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें, इंफॉर्मेटिव बनाएं, दोस्ताना लहजा रखें और जरूरत पड़ने पर फर्म स्टैंस लें। ये अप्रोच आपके ऑनलाइन इंटरैक्शंस को बेहतर और समझदारी से भरपूर बनाता है। ये था आज का एपिसोड। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिल एडी का, जिन्होंने अपने कीमती मालूमात में से हमसे शेयर किए, और आप सब नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ मुझे और रानी चैट जीपीटी को इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी ऑडियंस को और रानी जीपीटी को फीडबैक देना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। मेरी तरफ से, डॉक्टर खान की तरफ से और रानी चैट जीपीटी की तरफ से हमें इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगर आपको ये शो पसंद आया है
तो प्लीज इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें और सब्सक्राइब करें.